online classes? Sir, it's just sometimes sir, network issues hits very bad, and we are just sometimes sir, we just exit and are not able to join the classes, sir. That's a Yeah, great that's the issue to all of actually us. that's a major issue that we are facing, from Yes, the sir. previous sessions, right? Network issue from your end and from my end sometimes, because I have very good connections, but sometimes, sometimes power loss or Yes, sometimes sir. internet failure is always there. So these are some problems that we can't control, right? So we will try Yes, sir. to see what can we do for that. Okay. So apart Yes. from that internet issue and voice issue and other things, what are the other problems? Because that are the issue, technical problems that we cannot sort out, right? Sir, if Only talking what we can. honestly, sir, Huh, sir, the interaction things, sir, either yeah, between students or between student yeah. and teachers, sir, that is a major issue, sir, in this That's online the classes. that's the major thing that we also are Yes, missing, sir. right? As a faculty, we are also Yes, missing sir. that. We are not able to give you a proper feeling of the classes, right? So we have Yes, tried sir. very hard. We have modeled some online classes, and we have made some presentation. Even for the practicals, we have made some videos that you should at least feel about how the practicals are being done, right? So theory classes, we will be providing you with the notes, right? PDF of the notes, PowerPoint. Apart from them, all possible help that we can give you, we will try to give you, and let's hope the things get better sooner, right? So that we can Yes, join sir. and see each other's face, right? Yes, sir. Yeah. Yes. Any more thing? Sir, sometimes the meeting also hangs. Yeah, that technical problems, we can't do anything on that, no. Yes, That's yes. internet. So I'm saying that I have a very good internet, but I don't have, many people are staying at the home and they are using mobile or other internets. Maybe some issues with their internet problem, maybe some power failure is there or those things. So we Yes, sir. can't Some avoid that, software. right? For that, Yes. you just note down if someone misses some classes, or a group of people or a group of students misses some classes, then we will adjust the classes somewhere else, right? Apart from that classes, we will be providing you with the notes, lecture notes, and PowerPoint presentation, right? So I think we can Sir, go this with that. online class has also given an opportunity to record the class, sir. And one of our Yeah. student is also recording the class every session, sir. Sir Anmol Okay. Sharma, sir. Hmm. Yeah, That's you a can also major record. help. Yeah, that's gonna major help. You can record the classes. Even we have prepared some videos. For example, for a practical classes, we have prepared the video. At least you can get the feel of the classes, how the classes is going, how the practicals are being done, right? So if you get a time or something when university is open for the students, you can come to the lab and see how the practicals are being carried out, right? Theory classes, it's just okay that we are not seeing each other faces, but we think we can go with that, right? So till now 59 60 students have joined. Okay. So let me off my video, right? So that connectivity problem should not be there, right? So I will just go through the brief outline what you have been taught in the previous classes, right, by one of my students. So I will just go to the brief outline, then we will start with the classes. Okay. Okay to all of you. Yes, sir. Okay, Yes, let sir. me. Yes, sir. No problem, Okay, sir. Yes, sir. okay, Yes, okay. sir. Let me. Sir, Yes. sir, we will start from the very beginning, right? Yeah, from today I am going to start from the very beginning. Just few, I will give you a brief outlook because already it has been discussed. So I will give a brief outlook what has been discussed in the previous classes, right? Sure, जो sure, भी sure. previous classes में discuss हुई हैं उनको हम एक बार discuss कर लेंगे. A part आप चलेंगे. फिर उसमें आपको कोई problems query होंगी, then you will ask one by one, right? After the class, Okay, right? sure. You just note down the problems that you are facing, right? In the syllabus or what we are discussing, right? Then we will discuss it one by one, right? So the presentation is visible. Yes, sir. Your screen is visible, sir. Yes, My sir. screen Yours. is visible. Okay. Yes. Yes, That sir. is a Yes. titration or a Yes, sir. that is titermetric, right? So what you have discussed, what you have known about that titration, or first unit is your volumetric analysis, right? Volumetric analysis. So when we are talking about a volumetric analysis, still some people are joining. Let's wait for 2 to 3 more minutes. Uh, Sir, will you Still, provide us with this PDF?
Yeah, I will provide you with the PDF plus PowerPoint presentation that I am presenting here. That will also be given to you along with some lecture notes, right? That's not an Yes, issue. sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, Uh, sir, by the time being, we can have an introduction, sir. Sir, we really want to know about your history, sir. okay. You want to know about my I, history, not history, no. You want to know about my sir, profile. Okay. in particularly in academics things, sir. Oh, Not academic sounding things. like yes, Yes, sir. sir. Okay. And you seems to be of very young age, sir, and you are having a doctor thing, sir. So it's a very pride thing, I Okay. guess, sir. We were expecting you as in some 50 As plus, an sir, agent, no, to I be am not. honest. I'm just an assistant professor. I'm not a professor, right? I'm an assistant professor. So Okay. it's my fifth year in DTU, right? I am teaching you. It's my fifth year. 5 साल हो गए मुझे DTU में. मैंने PhD complete की थी in the year 2015. I have completed my PhD. After that, I have done one year postdoc, and I have joined as assistant professor in Department of Applied Chemistry in 2016. So from 2016 onwards, I am teaching first year and some classes in fourth year and some MTech classes, right? So basically, apart from teaching, my research interest is in biosensors. आपने कभी सुना है किसी ने biosensors के बारे में? सर थोड़ा बहुत कभी शायद सुना सर हो. थोड़ा बहुत हाँ, सुना है. कभी Yes, sir. सुना है ना सर बायोसेंसर? सर हाँ, आधार कार्ड वाले आधार कार्ड वाले बायोसेंसर्स नहीं है. बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक इज ए डिफरेंट थिंग. दैट इज आल्सो ए सेंसर्स. बायोसेंसर्स. आपने कोविड के टेस्ट के बारे में सुना है कैसे हो रहे हैं? अबाउट द कोविड टेस्ट, दैट इज Yes, sir. द कोरोना टेस्ट कैसे हो रहे हैं? करवाया भी है. कैसे करते? ले करवा ले, किसी ने भी लेकर मैंने 2 बार करवाया है. हाँ. Rapid testing is one of एक the हो रही है हाँ रैपिड टेस्टिंग. द रैपिड टेस्टिंग एंड वन इज द आरटीपीसीआर टेस्टिंग, राइट? So RT-PCR Yes, testing yes, was they sir. collect your swab sample and it took nearly 12 to 14 hours to get the results, right? Or 1 or 2 days, right? और दूसरी एक होती है रैपिड Sir, टेस्टिंग. 2 days. रैपिड टेस्टिंग का क्या है? रिजल्ट आपको विद इन ए आवर आपको मिल जाता है. रैपिड टेस्टिंग जो आपको वही किट होती है, एक किट में आपको देख के बता देते हैं. ठीक है, सुना होगा रैपिड टेस्टिंग. yes sir. Yes, sir. हाँ, रैपिड टेस्टिंग जो है दैट इज अ टाइप ऑफ बायोसेंसर, राइट? कि आपने उसमें अपने सैंपल डाले और 1 घंटे में आपको उसने रिजल्ट दे दिया कि यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? दैट इज अ टाइप ऑफ बायोसेंसर. ग्लूकोमीटर आपने देखा है? ग्लूकोज मीटर जैसे ग्लूकोज रीडिंग होती है, किसी ने देखा है? किसी के घर पे है कभी? Yes Yes, sir, sir. देखा है. सुना होगा ना? दैट इज अ टाइप ऑफ बायोसेंसर, राइट? कि हाउ यू कन्वर्ट द बायोकेमिकल सिग्नल इनटू ए मेजरेबल सिग्नल के डिजिटल फॉर्म में. आपने देखो, आप एक ड्रॉप ब्लड डाला एंड हाउ दैट blood react with the or react with the strip and it gives some signals कि आपके आपके उसमें glucose level ये है. So that is type of biosensor. So I generally work in this field in the development of biosensors, and I'm working on the diagnosis for cancer. I'm trying to develop some. We are trying, not I am, we with some of my students, and we are trying to develop biosensor for detection of cancer biomarkers, right? That is a broad field. You can go to the Google scholars and you can see my profiles. I have more than 40 papers. Apart from that, I have a book on biosensors. So that's a long story, right? So Sir, it all seems very interesting, sir. yeah, that's an interesting part. And I think many of you are your background is from biotechnology. No No, sir, sir. but I had Mechanical biology क्या in production क्या and 12th. चीज है इसमें? electrical students. हाँ. I had biology in 12th. Oh, no, you have biology in 12. So this is A12 batch, ना? A12 batch. तो Yeah, आप sir. लोग We क्या are क्या from Yes sir. mechanical production and मैकेनिकल? electrical. Okay, mechanical production and electrical, right? Okay, Electrical. Electric. A16. अच्छा, morning I was taking A16 batch. That was of biotechnology. Okay. Okay, so that is an interesting part of my research that working on a biosensor. You can see on a profile, right? So we can discuss it in the later on to what we do and what I do, because we have to finish the syllabus. That's the most important thing, because based on your syllabus, the marks are given, right? So marking की pattern आपको पता है? Marking कैसे होगी? मार्क डिवीजन कैसे है आपके एग्जाम्स के मार्किंग के? No, sir. हाँ, No, sir. क्या है? यस, आई एम नो नॉट. सर नहीं पता. No, नहीं sir. नहीं पता. पता. नहीं पता. नहीं पता. आपके जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर के होंगे? यस, सर अभी कुछ आइडिया नहीं है.
कुछ नहीं आइडिया है। ओके, चलो हम बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जो आपके मार्क डिवीजन जो है दैट इज 50 नंबर फॉर द प्रैक्टिकल्स, राइट? तो प्रैक्टिकल्स भी आई थिंक योर बैच इज विथ मी आल्सो। आपके कौन सा है प्रैक्टिकल, मेरे साथ है या किसी और के साथ है जो प्रैक्टिकल है आप लोगों का? अरे कोई किसी सर और हम लोगों के ग्रुप तो डिवाइडेड है, सबके 3 ग्रुप में। ग्रुप्स बने हुए हैं। हाँ, तो जो भी ग्रुप है, कोई ग्रुप मेरे साथ है क्या, किसी का भी कोई भी ग्रुप? नहीं सर। A12 चलो होगा, देखते हैं, कोई बात नहीं है, राइट? सो 15 मार्क फॉर योर प्रैक्टिकल्स, राइट? 15 मार्क फॉर योर इंटरनल असेसमेंट, राइट? इंटरनल असेसमेंट्स जो हो गए वो बेस्ड ऑन द असाइनमेंट्स, राइट? अलग अलग क्लास ग्रुप टेस्ट, में बटे हुए हैं सर। नहीं वो ग्रुप की बात हम अब कॉमन बात कर लेते हैं, ठीक है? जो प्रैक्टिकल्स ग्रुप में बैठे हुए हैं, फिर 25 के ग्रुप होंगे, आई थिंक 4 ग्रुप्स आर देयर, राइट? अब वो मुझे भी देखना पड़ेगा कि आप लोग के ग्रुप मेरे पास है या किसी और के पास है, राइट? तो अगर हम डिवीजन ऑफ मार्क्स की बात करें तो 15 मार्क इज फॉर प्रैक्टिकल्स, राइट? 15 मार्क इज फॉर असाइनमेंट्स, दैट इज अ क्लास वर्क असाइनमेंट्स नंबर्स। उस पे आपके जो 15 मार्क्स हैं उसमें आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, सम क्लास टेस्ट होगा, राइट? एंड बेस्ड ऑन योर ऑनलाइन अटेंडेंस, राइट? आपको वो 15 मार्क्स में से जितने मार्क्स अवार्ड होंगे वो अवार्ड किए जाएंगे। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस Yes. सर। Yes, sir. चलो हो गए, 30 मार्क्स हो गए। हाँ हाँ जी, अभी आपके सर और जो हाँ सर, जब ऑफलाइन होता था तब अटेंडेंस के मार्क्स होते थे। तब तो कंपलसरी होते थे, तब तो एकदम हम, क्योंकि ना तब आप जब भी प्रैक्टिकल्स की बात असाइनमेंट्स की बात करते थे, क्योंकि वहां भी हम अटेंडेंस लेते थे, ठीक है ना? तो उसके कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स होते थे, है ना? ऑफलाइन, क्योंकि वहां पे हम अटेंडेंस लेते थे। अब ऑनलाइन मोड में भी हम अटेंडेंस लेंगे जितने भी हैं, और उसको भी हम करेंगे। अब मे बी सम, अगर कोई इश्यूज होंगे, मेडिकल इश्यूज होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड, राइट? बट वी आर फ्लेक्सिबल, बट इट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस ऑल ऑफ यू। और कोई भी ऐसा नहीं कि वो फेक आईडी लगाए, क्योंकि बीच बीच में मैं किस क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, और दोज हु आर नॉट अवेलेबल कि आपने ऑनलाइन लॉगिन कर ली और निकल गए और ये सोच रहे हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं होगा, because many times the questions are being asked that we are discussing in the classes, right? So I am assuming that each one of you has a pen and copy with you. आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होंगे, या फिर मैं बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? और आंसर्स हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको प्रेजेंटेशन और इसके बाद भी आपको लगेगा हाँ ये टॉपिक्स रह गया या ये चीज समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट यू कैन पॉइंट आउट दैट क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन सेशन। क्लियर? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Sir, assignments जनवरी से शुरू हो रहे हैं क्या? क्या चीज? Assignments हाँ, असाइनमेंट्स क्या? जनवरी से शुरू हो रहे हैं क्या, या दिसंबर में आने नहीं, लगेंगे? असाइनमेंट्स आपको विद इन द टाइम फ्रेम जब भी होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और एक विद टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इस टाइम फ्रेम में आपको सबमिट करनी है, राइट? तो मैं गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा, उस क्लासरूम में ही आपको वो सब सबमिट करने हैं, ठीक है? प्लस सरप्राइज क्लास टेस्ट भी होंगे आपके उसमें, ठीक है? Yes. और वो सर जो भी सरप्राइज इंस्ट्रक्शंस होंगे, टेस्ट, सर सरप्राइज टेस्ट का सर 1 हफ्ते पहले बता दीजिएगा सर। सरप्राइज टेस्ट 1 हफ्ते पहले कभी नहीं बताई जाती वो, क्योंकि इसीलिए तो सरप्राइज है, नहीं तो वो टेस्ट रह जाता ना। सर 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 कई बार होता है सर कि जैसे नेट नहीं चल रहा तो सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते हैं। वही सर। सर अगर नहीं, सरप्राइज एब्सेंट हो कोई गए दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को मिस हो जाता है। जो नहीं प्रेजेंट सर, होगा उसके लिए हमको, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर आप एक काम करना ना, 1 हफ्ते पहले बता देना कि इस हफ्ते में कभी भी हो जाएगा, तो इस हफ्ते की हाँ क्लासेस हाँ, कर लो। ये अब उस दिन का नहीं बताऊंगा कि इस दिन मैं कर लूंगा टेस्ट, है ना? यस सर आप वीक बता दीजिएगा Yes, कि इस sir. आप 20 बता देना सर। बस सर हम अरे ठीक है, अभी टाइम है, अभी क्लास चलने तो कुछ सिलेबस खत्म होगा तब ना टेस्ट होगा। ओके सर ओके सर कभी टेस्ट रख लें आप लोगों का, एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट आई विल डिसाइड दैट यू विल ज्वाइन द क्लास और नॉट। हाँ ओके सर। चलो, ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा टेस्ट मैं अभी बस डिवीजन ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ आपको, है ना? 15 marks is for practical, 15 mark is your class assessment, right? And 30 mark is for your mid-sem exam, and 40 marks is for your end-sem exam, right? That's the general division of the mark. इसमें अगर कोई भी changes होंगी, because the classes are been taken online, right? तो अगर if there is any changes, वो आपको हम टाइम जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर? सर हमें कोई प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है क्या इस बार? प्रोजेक्ट का मेरे ख्याल से अभी तक क्लियर नहीं है, आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगा। शायद प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से
फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और एमटेक कैंडिडेट, आप लोग में जो भी होगा हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अगर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा करना होगा तो दैट विल बी ग्रुप आपको बना के, और कुछ आपको इनोवेटिव आइडियाज हैं कुछ, वो आपको सबमिट करने हो सकते हैं। लेकिन अभी इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, राइट? जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको कन्वे हो जाएगी। यस, एनी मोर थिंग? No, sir, we can continue, sir. So we can start with the first unit, that is a volumetric analysis, right? So when we are talking about volumetric analysis, right? What do you mean by volumetric analysis? If someone is asking, what is volumetric analysis? Yes, तो क्या बता सकते हो? How you can define volumetric analysis? Sir, it is a quantitative measure to find out the concentration of an unknown solution. Yeah, correct. Yeah, to find the concentration of an unknown solution, right? And you have said that it is a quantitative analysis. So now the first question is, what is quantitative analysis? So which deals Sir, with the sir, when we quantity. Sir, when we deals with molarity, normality, and quantitative things, then it is called, sir, quantitative analysis, sir. Okay. Suppose I have given you a mixture, right? I have given you a mixture of some chemicals. I have given a solid mixture, right? So first thing, what you will do with that mixture? And I have said that, okay, I have given you a mixture. Now tell me about the different details, right? The first thing, what you will do with this mixture? In 12th, you have done mixture analysis. I think all of you have done mixture analysis in 12th. Yes, sir, Practical? salt analysis. Salt analysis. That was salt analysis, right? Salt analysis. Yes, sir. We have done in the year 2001, 12th. Okay, right. So mixture analysis or the salt analysis. So first thing, what you do with the mixture? You have been provided with a mixture, right? पहले आप original solution बना So लेते थे। first we'll do physical observation. Yeah, you go at the physical observation, right? Physical observation, what you do? Sir, color, order. So color and First you check with the color, order, texture. Okay. So this is what type of analysis? Qualitative analysis. That is qualitative analysis. In qualitative analysis, you just see about the texture, color, smell. Then you dissolve it in solvent. That is a solution test. Okay, it is soluble in water or it is soluble in some organic solvent. Then you go for the flame test, right? So this type of analysis are qualitative analysis, where you get to know about the quality of the mixture. So what is the quality? What is the texture? What is the smell? What is the solubility of the compound? What is the smell of that particular material? Right? And after that, you go for the composition part, right? That what is the actual composition of the mixture? For that, you go for titration or many physical instruments that you have not done in 12, but we will discuss that how you can go for the quantity. What is the composition of the mixture? For example, if I have added mixed two materials in one, and I want to know that what are the different components that are present in the mixture, and for that you go for the quantitative analysis. So quantitative analysis may be of two types. That is gravimetric analysis, right? Gravimetric analysis means, yes, anyone? Sir, no idea, sir. Okay, gravimetric analysis, it means gravitation. Gravi means gravitation. It means it is dealing with the mass. Yeah, mass analysis. Okay, or we are dealing with the solid sample, right? We are dealing with the solid samples. Got my point? Gravimetric. Metric means measurement, right? Yes, sir. Gravimetric. It means we are seeing the we are based on their mass change or based on their solid substances. When we are dealing with the solid substances and when analyzing them, that is gravimetric analysis. And second is the volumetric analysis. Volume, it means there is change in the volume, right? So based on the change in the volume, we derive some parameters, that is a volumetric analysis. So when we are talking about chemical analysis are of two types, that is qualitative analysis and quantitative analysis. Quantitative analysis is of two types, that is volumetric analysis and second is the gravimetric analysis, right? Now in your syllabus, you have to deal with you have to study what is volumetric analysis. So as one of you has defined that volumetric analysis, it is a type of quantitative analysis in which we determine the concentration of a solution by measuring volume of one solution needed to completely react with another solution.
right? So in layman language, what we can say that in volumetric analysis, we measure the concentration of a unknown solution by using the concentration of a known solution. Clear, everyone? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. yeah. So Yes, in sir. volumetric analysis, you know two things. That is a solution whose concentration is to be determined, and a solution whose concentration is already known. Clear? So the principle of basically titration is based on the chemical reaction between the analyte and the titrant, right? That react together to give the product. Now the analyte is the solution the solution of unknown concentration, right? But you know the volume. And a titrant is the solution whose concentration is known. Or generally the analyte is also known as titrant, titrand, titrant, whose concentration is unknown. So if you are taking a if you are titrating HCl with NaOH, suppose I am giving you NaOH solution, right, whose concentration is unknown, and I have asked that you have to determine the concentration of NaOH, and you have to titrate with HCl whose concentration is 1 molar, right? Then how will you perform the experiment? Yes, anyone? Sir, we add HCl to NaOH and then wait for the neutralization You part will to add occur. HCl to NaOH directly. Sir, no, No. sir. HCl will be added in the burette and we'll take NaOH in the conical flask and we'll perform titration. And you will perform titrate, right? You will add the HCl in the burette, right? So the Yes. HCl is your titrant, right? Because you know the concentration of HCl, right? We'll And you also have, have to add an indicator. yeah, that is, we will also add some indicator. Why we will add indicator? So So that To we that we know can observe when the find the out the reaction, electrons like endpoint. to have observe the Okay, light we will reaction. okay, that we will discuss in point, equivalence point, that is we will discuss in the later slide, right? Now we have taken the NaOH in the conical flask and HCl in the burette, right? And we will start titration. We will start titration, right? And at certain point we have added some indicator, and at certain point it will show a color change, and you will get the end point, and from that N1V1 is equal to N2V2, you can calculate the normality of the NaOH, given NaOH solution, right? So that's what we do in the volumetric analysis. So the different apparatus or the different apparatus that we use in volumetric analysis are, that is a burette, right? That is another is a conical flask and pipette. So you pipette out known volume of an unknown solution into the conical flask. You add some volume of the solution or the titrant into the burette, and we titrate and just see the color change, right? So this is a brief outlook of the volumetric analysis. I think it has been previously discussed also, right? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir. when we are talking about titration, right? When we are talking about titration, so titration, it is a type of volumetric analysis. Titration is a volumetric analysis. Titration, volumetric analysis, or one more term is there, that is known as titrimetry. They are all the same thing, right? They are all the same thing. Now, when you are saying titration, this titration is of two types. That is a direct titration and a back titration. So what is a direct titration? I think previous class, Ms. Sakshi has discussed all these things. So what is a direct titration? Yes, anyone? I think it has Sir, been displayed in your screen, but I want to know what is direct titration. Sir, like we have taken the example of HCl and NaOH, we do direct Yeah. titration. Hmm. And back titration, so is with basically, PBTA and MN. Through that example, we will explain that sir, and we'll, we used zinc as well. yeah, Hmm. we won't be able to know when the titration is over directly. So we need to add another element so that it Hmm. can react with the excess of the whatever is in the burette, Hmm. and that will give the indication of um, when the endpoint is That will reached help us for to zinc. determine the concentration. Okay. Exactly. So we'll know Okay. ki how much of the other element we have added. So we'll know the concentration of two and we'll find the concentration of the third. इतना सब Okay. कुछ कब पढ़ा दिया? आपने क्लास नहीं अटेंड की होगी ना?
और या फिर आपने बैक में जाके ना पढ़ा नहीं होगा ना. हाँ So direct titration is you just add the analyte into the titrant and you get the end point, right? In back titration, now the question is why you need for a back titration. My question is why you need a back titration. Back Because titration does not mean कि देखो, आप ना ऐसे उसको उल्टा करके, but why you need a back titration? because तो there बिकॉज सर हम is सारे के visible सारे indication of endpoint having been एंड reached. पॉइंट इजीली आता है. Sir, we can't detect Yeah. the endpoint directly. So there are certain conditions when we go for the back titration. First, if during the titration, the titrant and the analyte, the reaction is very slow or very fast, right? Or the titrant and the titrant do not react completely with each other, or the reaction is very slow. In case, for example, in case of a weak acid and a weak base titration, right, it is not easy to determine the end point, right? So in that case you go for a back titration. Okay, there are certain conditions when you go for a back titration. So first is when the end point is not clearly detected during the titration, then you go for a back titration. For example, in the titration of a weak acid and a weak base, the end point is not clearly visible by the use of indicator, then you go for the back titration because the reaction process is very slow, right? Second is when there is some volatile substances present in the solution. For example, in case of in NH3, ammonia is there. That is a volatile substance. Then you go for a back titration. Third, when there is formation of some insoluble product or when there is some insoluble mixture or insoluble product is there. For example, if there is presence of calcium carbonate, then you go for back titration. So these are some examples when you go for a back titration. Clear? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. so Yes, Yes, sir. sir. Okay, these are some three examples then where you go for the back titration. So direct titration is where you direct analyte and the titrant react together to give the product and the end point is clearly visible. And back titration is a method used to determine the concentration of an unknown using an excess amount of a compound with a known concentration. So certain conditions are there where you go for the back titration. That is when the end point is when during the titration when the endpoint is clearly not visible. Yes, Vishal Daiya. विशाल, यस सर. अभी आपने क्लास ज्वाइन की है? यस सर, मेरे सर नेटवर्क में इशू आ रहा था सर. मैं ट्राई कर रहा था पर हो नहीं रहा था. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो है, ठीक है, आप कोशिश करना कि आप टाइमली ज्वाइन करो, है ना? ओके इट्स सर. ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, यस सर. राइट? और यू विल मार्क एब्सेंट इन द क्लास. ओके क्लियर? सर. ओके ठीक है, सर. चलो, दैट वाज डायरेक्ट एंड द बैक टाइट्रेशन. नाउ फॉर द these are some difference between a direct titration and back titration. ये already discussed है, slides आपको मिल जाएंगी, आप एक बार इन्हें देख लेना, है ना? Then for volumetric analysis or for titration you need solution that is known as a standard solution. क्या होता है? What is a standard solution? so What is a basically standard solution? और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के सॉल्यूशन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसमें से एक हाँ, होता है जैसे वो स्टेबल होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करता इजीली और मतलब एटमॉस्फेयर से इजीली रिएक्ट नहीं करता, ताकि उसका प्योरिटी मेंटेन रहे और हम उसे टाइट्रेशन में यूज कर सकें. yes, anyone और कोई Sir, anyone they also want to react add some points completely. in that? Standard solution is Sir, one they where react all its completely. properties are known. Yeah, whose properties are known, so we can say that standard solutions should be stable, right? It should react rapidly with the analyte so that the time required between additions of the reagent is minimized. It should react more or less completely with the analyte so that satisfactory endpoint are realized, and it can undergo the selective reaction with the analyte that can be described by a balanced equation, right? So these are standard solutions. So for volumetric analysis, we generally take a standard solution, and the properties of the standard solution are that should be stable, react rapidly होना चाहिए, it should react more or less completely with the analyte, and it can undergo the selective reaction with the analyte. So these standard solutions are of two types. What are these types?
Primary standard and secondary standard. Primary standards and secondary standards, right? So what are primary standards solution? It is an ultra pure compound that serve as the reference material for the titrometric analysis. So it should be extremely pure, highly stable, or and can be weighed easily. Example are Na2CO3 and KSP, right? And secondary standards are, what is secondary standards? Yes, anyone? So they are comparatively less stable and less pure. They are less pure than the primary stable, less stable, right? Example is NOH and HCl. So in exam, sometime it has been asked what are primary standard solution, what are primary standard solution and secondary standard solution, and give some examples of primary standard solution and their corresponding secondary standard solution, right? So, Sir, हाँ जी, we did this part in Vivas for school too, but हाँ. secondary का मतलब need क्या है, and the one we use in for practicals, which one is that? जनरली बोथ दोनों की ही जरूरत पड़ती है, हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ती है और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है टाइट्रेशंस में, राइट? अगर हम किसी भी ऐसे मटेरियल्स को हम यूज कर रहे हैं जिसकी हमें प्योरिटी नहीं पता है या फिर जो लेस स्टेबल है, दे आर जनरली बीन कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं, दे आर बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, राइट? कि एकदम एक हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पता है, उससे हम उठा के फिर हम उनके सेकेंडरी सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं, है ना? और उसके अगेंस्ट ही हम किसी को टाइट्रेट करते हैं. सब कुछ हम प्राइमरी से क्यों नहीं करते, सेकेंडरी हम बनाते क्यों हम हैं? प्राइमरी से भी कर सकते हैं. नहीं, हम प्राइमरी, देखो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द प्योर फॉर्म, है ना? तो उनको हम रखा गया है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स पे है, क्योंकि आप जब भी करोगे दे आर लेस प्योर. फॉर एग्जांपल इन सब मिक्सचर आप देखोगे कि उसमें प्लस H2O भी होता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O and they are hygroscopic, they absorb the water molecule from the atmosphere. So in that case, primary standard solution, it means it is a reference material for titrable analysis, and we can say that is a fixed value. But for the secondary standards, there may be variation in the composition, and due to this there may be some change in the values of the titration, right? So Yes. we generally prepare the secondary standards from the reference material that is known as the primary standard materials, because they are pure and stable and they can be weighed easily. But secondary standard solution, for example, if you are taking NOH exists in the pellet forms, right? When you take out and weigh, sometimes what it absorbs the water molecules, and or if you put NOH in the open, what it will do? It will absorb water molecule and goes in the liquid state, right? So these are secondary standard solution. It means his purity is not defined. Okay, I understand now, sir. Thank you. Okay. Now, during the titration, two terms are there. That is the end point and the equivalence point. So, but for example, I have said that when you are titrating HCl with NOH, right? When you are titrating NOH with HCl, right? Then you are adding HCl in the burette and you are taking NOH in the conical flask. And when you are adding HCl drop by drop in the NOH, not drop by drop or volume by volume in the NOH solution, at some point the number of moles of this NOH will be equal to that of the number of moles of the HCl, right? So that is known as the equivalence point. So we can say that the equivalence point is the theoretical completion of the reaction, or the point at which the equivalent mole of the titrant is added to the analyte solution in the conical flask, right? Now, why there is a need for an end point? Yes, because in titration we generally want to determine the equivalence point of the titration, right? Now, what is the need of the end point? So actually, Sorry. Because there is no color change in the equivalence point. Yeah, equivalence point पे तो कभी भी color change नहीं आएगा, वो तो बात सही है, लेकिन why there is a need for an end point? so that we can detect that the reaction is over and सर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए सर एंड पॉइंट का नीड पड़ता है सर. हाँ ठीक है, एकदम सही बात है कि रिएक्शन जो कंप्लीट होगी, लेकिन कंप्लीट तो आपकी होगी जब इक्विवेलेंस पॉइंट था तभी, है ना? लेकिन तब हम उससे क्या बोलते हैं? सर बट हमें वॉल्यूम मिल जाता है, जो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाता है जिसके हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होता है, ताकि हम दूसरे वाले की नॉर्मैलिटी या मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकें. वो तो ठीक है, वो तो आपको एंड पॉइंट सर वो मिल गया, कलर है चेंज ना? हो जाता है. एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट जब रीच होता है वो नहीं चलता और कभी उतनी एक्यूरेसी से पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स अ थियोरेटिकल पॉइंट जिसमें हो चुका है, हाँ, उसके बाद भी exactly. थोड़ा सा ड्रिप हो Simple जाता है. thing is that you equivalence point is not visible by your naked eyes, है ना? Equivalence point आप देख नहीं सकते हो,
आपको एंड पॉइंट कब पता चलता है? जब आपने एक इंडिकेटर डाला, व्हेन यू हैव एडेड सम इंडिकेटर इनटू द टाइट्रेंट और इनटू द एनालाइट, राइट? So the change in indicator, the change in the point, what at the equivalence point, what the number of moles of that acid and base are equivalent, right? Right. When you add an excess of the acid into the solution, for example, I've taken example of HCl and LOH. When you add excess of that HCl into the conical flask, then the indicator will show a color change, right? So you say that that is the end point. It means, well, there is excess of one of the titrant in the titrate solution, or well, there is excess of the analyte in the titrant, then there is a color change. And this color change is shown by the indicator that we are putting it into the solution. And the difference between this equivalent point and the end point is known as the indicator error. So during the titration, we have to determine the equivalence point, and the equivalence point cannot be are not visible or cannot be determined. That is a theoretical point, but it practically कर सकता है. Yes. So it is a theoretical point. So end point just tell us about the excess of the other analyte that is been added into the titrant, and that is shown by the color change of the indicator. Suppose let's forget about the indicator, and I'm saying that the titration is HCl and NaOH, and you have to determine the equivalence point, or you have to determine the concentration of an unknown without using an indicator. Possible है या नहीं है, ये बताओ? No sir. Yes, anyone? मैंने पूछा कि अगर एंड, आपको मैंने बोल दिया कि आपको इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है हमें इसका, ठीक है, या एंड पॉइंट निकाला, और मैंने आपको बोला कि इंडिकेटर नहीं दिया आपको मैंने, तब क्या फिजिकली पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? नो सर। तो वो डिपेंड करता है हम कौन से टाइप की टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर वो प्रेसिपिटेशन है तो फिर हम शायद पता कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट होगा प्रेसिपिटेट जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो हम एंड पॉइंट तक पता कर सकते एसिड बेस टाइट्रेशन ही दे दिया पहले, HCl और NaOH ही दे दिया आपको, फिर सर तो डिफिकल्ट है, तो शायद नहीं कर पाएंगे हम. डिफिकल्ट है सर पीएच चेक करेंगे. pH तो then you have to use ना. नहीं, then you have to use physical apparatus like pH meter, है ना? But तो isn't that considered an indicator too? नहीं, मैंने इंडिकेटर तो हमने आपने इसलिए डाला है कि फिजिकल चेंजेस को पता, वो क्या बोलते हैं, कलर चेंज हो तब पता चलेगा ना. इंडिकेटर का काम बस कलर चेंज होना है, ठीक है. उसके बेसिस पे आपने एंड पॉइंट निकाला, इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं निकाला, है ना? Yes sir. Got my point? So you have determined the end point. Equivalence point is just the theoretical point just before that end point, है ना? Just before that end point वो equivalence point होता है. तो अगर आपको accurately equivalence point measure करना है, then you put some pH meter or some physical apparatus in the solution, और एक particular आपको पता चलेगा NaCl और आपने NaOH और HCl का titration किया था at 0.7, that is the equivalence point for that titration, right? So for that you have to use some physical apparatus, right? So equivalence point can be determined by using some physical apparatus. Second, we are more concerned here with the end point. And now the difference between the end point and the equivalence point, that is known as the indicator error, right? That is the difference of 1 or 2 drops. Clear everyone? Yes sir. यस सर. सर हाँ जी, हाँ जी. सर अगर रिएक्शन में पीएच चेंज नहीं होगा तो हम विदाउट इंडिकेटर एंड पॉइंट निकाल सकते हैं. रिएक्शन में क्या नहीं होगा, क्या होगा? यस, पीएच चेंज नहीं हो रहा है. नहीं, पीएच चेंज नहीं होगा तो फिर तो आपका टाइट्रेशन ही नहीं होगा ना, फिर तो आपकी बात ही खत्म हो गई. सर ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें कोई पीएच चेंज हो ही ना, दो न्यूट्रल. ऐसा कोई रिएक्शन होगा तो हम टाइट्रेशन करवाएंगे ही क्यों फिर? अच्छा ठीक भाई, टाइट्रेशन का होल पर्पस ही तो है दोनों को रिएक्ट होगा तो देयर बेस्ट पे चेंज द पीएच, है ना? अगर पीएच चेंज होगा तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज का. फिर हम वॉल्यूमेट्रिक की बातें नहीं करेंगे, जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे हम, है ना? ठीक है, राइट? हाँ जी सर, एक बार पिछली स्लाइड पे कर देंगे, एक चीज पूछनी है. हाँ बोलो. सर मैं ये कह रहा था कि हमने ये लिखा है थियोरेटिकल कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हाँ, तो हम लोग इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि ये प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है रिएक्शन. हम देखो प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहे हैं, थ्योरेटिकली एक्चुअली हमें डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, राइट? दैट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू कि एट दैट पीएच है. प्रैक्टिकली तो हम जो आप बात कर रहे हो वो एंड पॉइंट ही डिटरमाइंड होती है, राइट? दैट इज क्योंकि एंड पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है, और इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट,
आप इक्विवेलेंस पॉइंट को आप यू कांट विजिबल नहीं है आपके लिए, वो देख नहीं सकते हो. फॉर दैट, फॉर एंड पॉइंट देयर इज ए स्पेसिफिक इंडिकेटर देयर, राइट. सो इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज अ थ्योरेटिकल कंप्लीशन. आप रिएक्शन लिख के बताते हो कि यस NaOH plus HCl गिविंग, क्या होगा रिएक्शन? NaOH plus HCl giving NaCl plus water molecule, right? So that is the equivalence point for that reaction. But end point is when you see a color change. But for equivalence point, you do not see a. Yes, yes. सर फिर इसका यूज क्या है कि किस क्या चीज कहते का? हैं इक्विवेलेंस पॉइंट का? जब ये थ्योरेटिकल है तो फिर इसका यूज क्या है जो प्रैक्टिकली पाया ही नहीं जा रहा है? हाँ, मैंने इसीलिए कहा ना, प्रैक्टिकली पाया नहीं जा रहा, लेकिन जो आप डिटरमाइन कर रहे हो ना, बेसिकली आपका काम है कि कब नंबर ऑफ मोल्स इनके इक्वल हो गए. तो N1V1 करके जब आप दूसरे के अननोन के निकालते हो, दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वलेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है. लेकिन इक्वलेंस पॉइंट इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द नेकेड आईज. सो दैट इज एरर. जो भी आप कर रहे हो, देयर इज सम एरर दैट इज नोन एज द इंडिकेटर एरर. अगर आपको इक्वलेंस पॉइंट निकालना है, देयर इज ऑटो टाइट्रेटर इज देयर, right? Auto titration, automatic instruments are there, physical instruments are there that can accurately calculate the value of the equivalence point. But अगर आप लैब में जाओगे तो लैब में भाई उतने apparatus तो सबके पास होंगे नहीं, then we go for the end point. तो और इनके बीच का जो डिफरेंस है, एरर है, that is known as the indicator error. हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए करते हैं, एंड पॉइंट के लिए नहीं करते हैं. आई बात समझ में? यस सर, थैंक यू सर. यस. अब एंड पॉइंट हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमने इसलिए डाला कि हमें बस पता चलेगा कि कहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. अदरवाइज इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आप पता नहीं कर पाओगे, फिजिकली आप देख नहीं पाओगे इसको, विजुअली आप नहीं पता कर पाओगे उस चीज को, राइट. सो इट इज अ थ्योरेटिकल कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. सो नाउ titration, there are 4 types, that is acid base titration, complexometric titration, redox titration and precipitation titration, right? These are 4 type of titration. So in your syllabus we have to discuss all these 4 type of titration. So first we will go for the acid base titration. Acid base titration आपका डिस्कस हो गया था प्रीवियस क्लास में, है ना? यस. हाँ सर. यस सर. Yes, हो sir. गया था. कितने टाइप के होते हैं? I am getting reply from now only 3 or 4 people. Four Rest of type. all are sleeping. The No, strong sir. acid, सर strong एक base. बार रिपीट कर No, दो sir. सर. मैं ये बोल रहा चार था कि तरीके के मुझे ना होते हैं. आंसर जो बस 4-5 लोगों से मिल रही है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? नहीं सर, सर वो chaos ना क्रिएट हो जाए सर, इसलिए बैठे हुए हैं सर. नो हाँ, सर. नहीं ठीक है, बाकी हो ना, चलो अच्छी बात है. Yes, Yes, sir. So ये Yes, sir. this chapter is important because in practical it almost this contributes 75% in our practical also. Almost 75% इसके practical में भी है इस chapter के, है ना? तो आप यहाँ अगर क्लियर हो गए तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत आसान हो जाएंगी चीजें. लेकिन यहाँ अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ के नंबर तो गए, प्रैक्टिकल के भी नंबर आपके चले गए. अब जावेद लिखते हैं सर कौन सी ब्रांच की क्लास चल रही है, उसको बताओ यार कौन सी ब्रांच की क्लास चल रही है. सर कर दिया उसने शायद लीव. सर वो भैया पता नहीं ब्रांच सर, बाहर का बच्चा आ गया है सर शायद. वो हमारे बाहर का बैच का नहीं था. सर हमारी हमारे क्लास- बैच में कोई जावेद नाम का स्टूडेंट नहीं है. नहीं, तो जो ईमेल आईडीज जो आपके हम मेरे साथ शेयर हुई हैं उसमें उसी में गया होगा, या तो लिंक किसी बाहर ने शेयर किया होगा, है ना? सर हमारा एक ऑफिशियल क्लास ग्रुप है सर, तो सर कई बच्चों की ना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पेरेंट्स की है सर, तो इसलिए मैंने क्लास लिंक जो थी ना सर वो ऑफिशियल ग्रुप पे डाल दी थी. चलो लेकिन सर आप ना उसपे भी बस टीचर्स हैं और वो हैं अपने बच्चे ही हैं सर. ये सर कोई क्लास का बच्चा ही बाहर दे दिया सर, चला गया, कोई बात नहीं सर, वो कोई न्यूसेंस नहीं, कोई क्रिएट बात नहीं नहीं, करेगा मतलब सर. हाँ कोई इशू नहीं है, वो तो हम देख लेंगे, बट ये अवॉइड करें आप, है ना? और इवन सब मेल आईडीज और ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है? तो वो कोशिश करो वो मुझे जिस मेल आईडी से मैंने रिप्लाई किया उसमें अपनी करेक्ट ईमेल आईडी भेज दो, ठीक है? आप अपने ग्रुप पे डाल देना जो उनके अपने Okay, एक्चुअल sir. ईमेल आईडीज है, हम मैं अगली बार से हम उसको ऐड कर लेंगे उसमें, है ना? ओके सर, ओके सर. बिकॉज इन द प्रीवियस क्लासेस हम अगर आपके ग्रुप में हम अगर लिंक भेजते हैं तो उसमें क्या होता था कि बाहर के बहुत लोग ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है? और मैनी स्टूडेंट कंप्लेन दैट आई हैव नॉट गॉट द लिंक इन स्पाइट वी हैव शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप. सो इंडिविजुअली मेल आईडीज हमने सबकी हमें मिल गई है, तो हम वी शेयर्ड द लिंक इंडिविजुअली सबको हम भेजते हैं, राइट? सो दैट बाद में कोई कंप्लेन ना करे. सो एसिड बेस टाइट्रेशन देयर आर 4 टाइप्स दैट आर क्या क्या है? Strong acid, strong base, weak acid, Weak acid, weak base. strong weak acid, base, strong acid, weak base, और weak acid. and weak acid and weak base. Yes, that are titration of a strong acid with a strong base, strong acid weak base, strong base weak acid, and weak acid and weak base. So these are 4 type of acid base titration, and
To study this type of titration, a titration curve is needed. So a titration curve is a graph of the pH versus the function of the amount of the titrate, that is acid or base, that is added to the solution. For example, if you are saying titration of a strong acid with a strong base, right? Now the titration of a strong acid with a strong base, दो केस हो सकती है. क्या क्या हो सकती है? Yes, दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, strong acid और strong base. First type of titration is acid base titration, is titration of a strong acid with a strong base. तो ये दो हो सकता है, या तो if there is titration of a strong acid with a strong base, it may be of two types. क्या क्या? The titrant can be either the acid or the base. Yes. First, when you are adding an acid into the base, right? Or we can say that the acid is your analyte, and second is when you are adding a base into the acid. दो condition हो गए? Clear everyone? Yes, sir. So Yes. in the burette में आपका जो एनालाइट है वो एक बार एसिड भी हो सकता है और एक बार आपका बेस भी हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा. सो टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में दो हो सकता है, व्हेन यू आर एडिंग एन एसिड इनटू द बेस और व्हेन यू आर एडिंग ए बेस इनटू द एसिड. क्लियर? फॉर एग्जांपल, इन योर प्रेजेंटेशन यू आर एडिंग ए बेस इनटू द एसिड, ए बेस that is NaOH and an acid that is HCl. Both are strong. One is a strong acid and another is a strong base. So when you are titrating NaOH, when you are titrating HCl with NaOH, you will get a curve that is shown in your screen, right? You will get a curve like this, right? So at a point, when HCl is in the solution, right, and you have put a pH meter in the solution, right? Now what will happen? So what will be the reading of the pH meter? Yes? Before the titration. Before the titration. When the conical flask has acid in it. Acid in it. Yes. Less than 7. The pH will start from at least 1.5 or less than 7. Less than 7. HCl is a strong acid, so pH will be around 1 or 2, right? Yes, sir. Yes, sir. 1.5 or 2. That is a strong acid. And gradually, when you will add NaOH, at one point you will see that there is a sharp increase in the pH, right? Because the NaOH will start neutralizing the HCl, and at 0.3 that is shown in your skin, you will see that is the equivalence point, that is near about 7. You will see that the number of moles of NaOH and HCl are the same. Now after that, when you start adding more of the NaOH, you will see that the solution will turn basic and the pH will be around 12 of the solution, and it gets saturated here because our solution will turn more basic. Clear? So that is a graph when you are adding NaOH, when you are adding a strong base into a strong acid. Clear? Now, what will the condition when you are adding a strong acid into a strong base? Yes? Anyone? When you are adding a strong acid into a strong base, नहीं न्यूट्रलाइजेशन होगा. ग्राफ कैसे होगी? हमें कंसर्न है ग्राफ की. सर जैसे वो है स्क्रीन पे वैसा ही होगा. ग्राफ वैसे ही होगा लेकिन अपोजिट से होगा वो, ठीक है? सर 14 से कम होना शुरू होएगा ना सर, वो अब उल्टा शुरू होगा, कम होना चालू होगा. स्ट्रॉन्ग बेस है तो it will start from 13 and after that it will gradually the solution will become acid after the end point. Clear? So दो ग्राफ्स इसके, आप जब भी कॉपी बनाओगे इसके दो ग्राफ्स बनाओगे, ठीक है? एक where you are adding a strong base into the strong acid and second we are adding a strong acid into a strong base. Clear everyone? Yes sir. Clear? Yes, sir. Next is titration of a weak acid with a strong base. ठीक है, weak acid and strong base ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ठीक है? ग्राफ आपको दिख रही है, इसमें भी दो कंडीशन होंगी. क्या क्या? Well, you are adding a strong base. When you are adding a base into an acid, second is when you are adding a acid into the base, right? So you will get two graphs for the two different type of titration. Clear? Yes, yes sir. yes हाँ, sir. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं बस आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है? थर्ड वन इज titration of a strong acid with a weak base. Example, LS3L HCl titration. You will get a graph that is shown in this here.
यहाँ भी for that also two type of procedure will be there when you are adding a strong acid into a weak base or when you are adding a weak base into a strong acid. तो इन दोनों की दो सेपरेट ग्राफ्स होगी, दो आप सेपरेट ग्राफ्स को, एक ग्राफ तो हमने दे दिया, आप दूसरी ग्राफ सर्च कर लो एक बार, ठीक है? That will be your assignment, right? और देख लो what is the difference between this graph and that graph, right? This is a graph when you are adding a weak base into a strong acid. Now, what will be the change in the graph when we are adding a strong acid into a weak base? Clear? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, Now, the sir. fourth type of titration, that is a titration of a weak base with a weak acid, right? Now, for this type of titration is not physically possible, right? Because the yield point is not clear for this type of titration, right? So for this type of titration, generally we go for the back titration or we use auto titrator. That is the physical instruments are being used for this type of titration because the end point is not clear. क्या होगा कि आप जैसे ही दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस है, आप जैसे ही टाइट्रेट करोगे एंड पॉइंट आ जाएगा, है ना? So for this type of titration, the end point is not clearly visible. So we go for a back titration or we go for auto titrator. That is physical instruments are being used when you carry out this type of titration. So we can say that for weak acid and weak base, the titration is not feasible, right? Not feasible. For this type of titration, you need some special care or special instruments are being needed for this type of titration. Clear? So acid-base titration, that is our four types that we have all discussed. So the summary of this acid-base titration is, in acid-base titration, a known volume of either the acid or the base is placed in a conical flask. The second reagent of known concentration is placed in the burette. The reagent from the burette is slowly added to the reagent in the conical flask, and the titration curve is a plot showing the change in the pH of the solution in the conical flask as the reagent is added in the burette. So by using the titration curve, we can determine the equivalence point of an acid-base reaction. That is the point at which the amounts of an acid and bases are just sufficient to cause the complete neutralization. And for strong acid and strong base, the pH is equivalent to the 7 at the equivalence point. For weak acid and weak base, the pH is greater than 7. And for strong acid weak base, pH is less than 7 at the equivalence point. So this is all about the acid-base titration. Clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Any Yes, sir. questions from this acid-base titration? हाँ जी. सर बस प्रैक्टिकल में एडवाइस होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ब्यूरेट में लेना है. वो आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है ना, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें आपको HCl के कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर दिया, कमर्शियल HCl की, है ना? हाँ जी. तो हम वहां पे इसलिए एडवाइस नहीं करते हैं आपको कि HCl को आप उसको फ्लास्क में डालो, क्योंकि आपको पाइपेट आउट करना है उसको. हाँ जी, पाइपेट आउट करोगे HCl ना चलेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आप उसको ब्यूरेट में डालो. बट जनरल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि जो भी अननोन होता है उसको हम क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क पे लेते हैं. ठीक है? ओके सर. ओके. तो ऐसा होता है, तो हम वहां पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और आप HCl क्या करते हो, उसको ब्यूरेट में लेते हो, है ना? Yes. Any more question? Sir, it's a bit unrelated, but मेरे ग्रुप में थोड़ी सी कंफ्यूजन है. Can you please confirm कि आप कौन से ग्रुप का प्रैक्टिकल लेते हो केम में, प्लीज? अच्छा, एक देखता हूँ. Let me see my timetable. आपका प्रैक्टिकल कब है? प्रैक्टिकल कब? थर्सडे. टुमारो थर्सडे 2 to 4 में है. मेरे साथ हो आप लोग, है ना? 2 to 3 and 3 to 4 ग्रुप 1, राइट? ग्रुप 1. ओके, थैंक यू सर. 12. या दैट्स माय ग्रुप 1 मेरे साथ है, और ओके ग्रुप 2 अब ग्रुप 2 पैरेलली किसी और के साथ होगा, कोई बात नहीं, सेम डे. ठीक है? सो थर्सडे भी है. यस. एनी मोर क्वेश्चन? यस. आई थिंक इंडिकेटर्स को हम अगले क्लास से शुरू करते हैं, क्योंकि एक पूरी टॉपिक है, ये खत्म कर लिया, आधे में रह जाएगा, फिर अगले क्लास में आप कंफ्यूज हो गए, है ना? ओके सर. यस. और आपकी एक क्लास आपकी नहीं हुई है, एक्सक्यूज मी सर, के लिए बोली थी. ठीक है सर
हाँ जी। सर सर प्रैक्टिकल का सर हमारा हाँ हाँ सुन रहा हूँ। लास्ट वीक लास्ट क्लास हुई थी सर, तो उसमें सर मैम ने सर पता नहीं कुछ विजन वगैरह का दिया था सर, और हमारे ग्रुप में मैम सही से कन्वे नहीं कर पाई थी मे बी मैसेज को, या फिर हम कोई लोग बात नहीं, सर। कल है ना, कल प्रैक्टिकल क्लास है ना? सर कल सर है ना? लेकिन मैम, यस सर सर, लेकिन मैम ने आज डेडलाइन डाल दी है सर कि वो सबमिट करना, और सर हमारा एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है सर। कोई और बात सर नहीं है, क्लास आज भी हम। हमारी 10 मिनट कोई में बात नहीं, एंड हो गई थी सर। कोई बात नहीं, कल क्लास है, मैं रहूंगा क्लास में, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर एक बार आप प्रियंका मीना मैम से ये मैसेज कन्वे कर देते सर, हम सबकी रिक्वेस्ट है सर। कोई बात नहीं, आई विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट क्लास, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं भी हूँ, है ना? तो ओके मैं सर, करता ओके हूँ, सर, मैं हो जाएगा, इट्स नॉट इशू, हम कर लेंगे उसको, ठीक है? ओके शुरू थैंक की यू सर। क्लासेज है, कुछ कुछ ये क्लासेज और भी है, थोड़ी बहुत दिक्कत, तो इसीलिए पहले आज आप लोग को ब्रीफ आउटलाइन एक बार दे दिया। मुझे लगा कि एक यस बार सर। एटलीस्ट मैं पता कर दूं कि आप लोग कहाँ तक सीखे हो, क्या जाने हो, है ना? नहीं तो मैंने आज पूरी ही क्लास रिपीट की है, जो आपके प्रीवियस जो भी आपको डिस्कशन हुआ है ना? तो यस सर। एनी एनी क्वेश्चंस अप टू हियर, क्योंकि ये अब रिपीट नहीं होंगी, अभी तक जो मैंने पढ़ा दी ये रिपीट नहीं होंगी। नो सर। Any questions you want to ask from these topics up to this acid base titration? सर बैक नो सर। टाइट्रेशन की जो 3 कंडीशंस थी वो एक और बार रिपीट कर दो प्लीज। मैं आपको उसकी वो दे दूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा, है ना? ठीक है। ओके थ्री कंडीशन, फर्स्ट इज फॉर when the yield point is not visible or not clearly visible. For example, weak acid और weak base titration के लिए you go for a back सर titration. सर हाँ, एक और क्वेश्चन था सर। सर रुक जा, जैसे खत्म हमारी कर लूं फिजिक्स। पहले, ये खत्म कर लूं। ओके सर, सॉरी सॉरी सेकेंड सॉरी इज सर, सॉरी। well, one of the analyte or the titrate is volatile. For example, in case of ammonia, NS3 is there, right? You go for a back titration, right? When there is some insoluble product, then you go for a back titration. These are ओके three थैंक यू सर। conditions when you go for back titration. Yes, yes, हाँ, कोई पूछ रहा था, पूछो। Yes. सर मैं कह रहा था सर, जैसे हमारी फिजिक्स के प्रैक्टिकल सर वर्चुअल लैब में होती है सर, तो हमारी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कैसे कंडक्ट होंगे सर? हाँ, केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स आपको वर्चुअल लैब्स, आपको हमने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आपको सर्कुलेट हो जाएंगे, है ना? और सर जैसे अमृता की वेबसाइट पे हम फिजिक्स के लैब परफॉर्म करते हैं, तो सर हमें केमिस्ट्री के भी उसी टाइम मीन टाइम में परफॉर्म करने होंगे सर? नहीं, आपको उसके रिगार्डिंग अमृता की साइट, ये मुझे आइडिया नहीं है क्या करते हो आप लोग उसमें, फिजिक्स का मुझे आइडिया नहीं है, ओके ओके, है कोई ना? नहीं तो सर, कोई केमिस्ट्री नहीं का सर। जो भी होगा, जैसे भी होगा प्रैक्टिकल से, हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। वी हैव प्रिपेयर्ड वीडियोस, राइट? हमने ओके सर। प्रैक्टिकल्स किए हैं, प्रैक्टिकल्स उसको रिकॉर्डिंग्स है, वो आपको हम वो करवा देंगे, है ना? ओके, थैंक यू एनी सर। मोर क्वेश्चंस? नो सर। सर सर हाँ जी। सर सर आपके रिसर्च पेपर सर डीटी में अवेलेबल है? क्या करोगे मेरे रिसर्च पेपर के? ऐसे ही बस पढ़ थोड़ा तुम जानने की गूगल पढ़ने। स्कॉलर पे जाना, मेरा नाम टाइप करना, डॉक्टर चंद्रमौली पांडे, वहां पे पूरा दिख जाएंगे गूगल स्कॉलर, और खुलेगा भी वो, है ना? ओके सर, ओके। और क्या करोगे आप? थैंक फोकस करो अपने सिलेबस पे, पास होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? दैट्स ए यू। ओके लॉन्ग सर। टर्म। आप बीटेक करोगे, अगर इफ यू वांट टू डू पीएचडी, बीटेक, एमटेक, आफ्टर दैट पीएचडी। सर हम बाकी बच्चे जा सकते हैं? बाकी बच्चे अब जा सकते हैं, मैथ की क्लास है अगली, तो जा अगली सकते हैं क्लास ना? बैच की है, ठीक है? हाँ सर। अटेंडेंस तो यस देके सर। जाओगे, अटेंडेंस देके जाओगे, आप लोग लेट लेट आए हो। लेट नहीं नहीं तो सर। कोई, आप लेट ले आओ, बाकी लेट आए, चलो वन बाय वन मैं रोल नंबर बोलूंगा, आप अनम्यूट करके आप मुझे यस सर बताओगे, ठीक है? यस सर। अब इसके आगे से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा, बट टाइम लगेगा। चलो, वन, वन, टू, प्रेजेंट सर। थ्री, सर वन प्रेजेंट। टू, थ्री, सर फोर, टू प्रेजेंट। फाइव, प्रेजेंट। सिक्स, प्रेजेंट सर सिक्स। सेवन, प्रेजेंट सर। एट, प्रेजेंट सर। नाइन, प्रेजेंट सर। 10, प्रेजेंट सर। 11, 11, 12, 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, प्रेजेंट सर। 14 प्रेजेंट सर। 16, प्रेजेंट सर 16। 17, यस सर। 18, प्रेजेंट सर 18। 19, 20, 21, प्रेजेंट सर। 22, 23, यस सर। 24, 25, प्रेजेंट सर। 26,
27, Yes, sir. 28, 29,